नमस्कार। मैं रथिन विश्वास आपको माइंस एक्ट की इस सीरीज़ की 5th वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग 4 वीडियो में फर्स्ट 4 चैप्टर को देख चुके हैं। आज 5th चैप्टर हम लोग देखेंगे माइंस एक्ट का। इसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 4 देखे थे। सेकेंड वीडियो में चैप्टर 2 इंस्पेक्शन एंड सर्टिफाइंग सर्जन सेक्शन 5 to 11। थर्ड चैप्टर कॉमिटी थर्ड वीडियो में देखे थे सेक्शन 12 to 15। फोर्थ में माइन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइंस सेक्शन 16 to 18 देखे थे। आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर प्रोविजन एज टू हेल्थ एंड सेफ्टी सेक्शन 19 to 27 देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोस भी बाकी चैप्टर का जो वीडियो है ये भी इसके बाद आएगा। ये 5th वीडियो है 5th चैप्टर के। प्रीवियस चैप्टर का अगर आप मिस किए तो आप इस प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल में जा कर के आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो भी रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट वीडियोस जो है ये इसके बाद हम लोग एक एक करके अपलोड करेंगे। शुरू करते हैं आज के 5th चैप्टर की प्रोविजन एज टू हेल्थ एंड सेफ्टी सेक्शन 19 to 27 इस वीडियो में। चैप्टर 5th में आपको सेक्शन 19 to 27 है, जिसमें सेक्शन 19 में है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, सेक्शन 20 कंजर्वेंसी, 21 मेडिकल अप्लायंस, सेक्शन 22 power of inspectors when cause of danger not expressly provide against exit or when employment of person is dangerous. Section 22A power to prohibit employment in certain cases. Section 23 notice to be given of accident. Section 24 power of government to appoint court of inquiry in case of accident. Section 25 notice of certain diseases, that is notified disease. And section 26 power to direct investigation of causes of disease. And इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन सेक्शन 27 पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। इसी सेक्शन के बारे में पहले हम लोग डिटेल्स जानेंगे और इसके बाद कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर जो लास्ट ईयर्स के डिफरेंट एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर का काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, इन सब क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, हम लोग जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर 5 का जो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 19 ड्रिंकिंग वाटर। इन एवरी माइन effective arrangement shall be made to provide and maintain at suitable point conveniently suited a sufficient supply of cool and wholesome drinking water for all persons employed therein. माइंस में सभी लोगों के लिए ठंडा शीतल और होलसम पियोजक जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी है, वो सबके लिए अरेंजमेंट किया जाना चाहिए। इसमें लिखा है सबके लिए अरेंजमेंट करना है। प्रोवाइडेड दैट इन केस अ पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड द चीफ इंस्पेक्टर मे इन लिeu ऑफ ड्रिंकिंग वाटर being provided and maintained at suitable points permit any other effective arrangement to be made for such supply. चीफ इंस्पेक्टर अंडरग्राउंड माइंस के केस में कुछ दूसरा मेथड्स भी अप्रूव कर सकते हैं। सेकंड सबसेक्शन
All such points shall be legibly marked drinking water in language understood by majority of persons employed in the mine, and no such point shall be situated within 6 meters of any washing place, urinal or latrine unless a shorter distance is approved in writing by chief inspector. ये पीने का पानी जहाँ रहेगा उस जगह पे पीने का पानी ड्रिंकिंग वाटर को लिखना है। किस लैंग्वेज में लिखना है? जो लैंग्वेज माइंस की ज़्यादातर लोग समझ पाए। हिंदी और लोकल जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसको लिखना है। और ए पॉइंट वॉशिंग प्लेस या यूरिनल लेट्रिन से मिनिमम 6 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। शॉर्टर डिस्टेंस चीफ इंस्पेक्टर जीएमएस अप्रूव कर सकते हैं शॉर्टर डिस्टेंस। थर्ड सबसेक्शन, in respect of all mines or any class or description of mines, the central government may make a rule for securing compliance with the provisions of subsection 1 and 2 and for examination by prescribed authority of the supply and distribution of drinking water. इस सबसेक्शन में बोला है इस माइंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये सबसेक्शन 1 एंड 2 में जो दिया हुआ है ड्रिंकिंग वाटर देना है और ड्रिंकिंग वाटर कहाँ रहेगा इसके ऊपर रूल बना सकते हैं और कोई अथॉरिटी इस को एग्जामिन करने के लिए भी रूल कर सकते हैं, जो कि माइंस रूल में हम देखते हैं। रूल नंबर 30 में ये ड्रिंकिंग वाटर के बारे में जो डिटेल्स दिया हुआ है ये इसी रूल को ही बताते हैं। कंजर्वेंसी, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 20 कंजर्वेंसी। देयर शैल बी प्रोवाइडेड separately for male and female in every mine a sufficient number of latrine and urinals of prescribed types so suited as to be convenient and accessible to the person employed in the mine at all times. There shall be provided separately for male and female in every mine. हर एक माइंस में मेल फीमेल का सेपरेट ली होना चाहिए। सफिशिएंट नंबर ऑफ लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स ऑफ प्रिस्क्राइब टाइप्स। प्रिस्क्राइब टाइप्स की जो प्रिस्क्राइब किया गया जो डिफरेंट टाइप है उस टाइप की लेट्रिन और यूरिनल सफिशिएंट नंबर में ये होना चाहिए माइंस में, और ये कन्वीनियंट और एक्सेसिबल प्लेस में होना चाहिए और ऑल टाइम ये एक्सेसिबल रहना चाहिए, डे एंड नाइट एवरी टाइम। All latrines and urinal provided under subsection 1 shall be adequately lighted, ventilated and at all times maintained in a clean and sanitary condition. ये जो लेट्रिन यूरिनल जिसके बारे में बोला गया है माइंस में प्रोवाइड करना है, इसको इसमें सफिशिएंट लाइट होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, क्लीन वे में मेंटेन होना चाहिए और सैनिटरी कंडीशन में रहना चाहिए। The central government may specify the number of latrines and urinal to be provided in any mine in proportional to the number of males and females employed in the mine and provide for such other matter in respect of sanitation of the mine, including the obligation in this regard for person employed in the mine as it may consider necessary in the interest of the health of the persons employed. इस सबसेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए बोला गया, जो कि स्पेसिफाई किया गया है माइंस रूल में। तो इसमें हम लोग रूल वाला जो वीडियो है रूल जब हम पढ़ेंगे तब इसमें और डिटेल में जानेंगे। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करने का अथॉरिटी दे रखा है इस सेक्शन 20 सबसेक्शन 3 में। नेक्स्ट सेक्शन 21
medical appliance. In every mine there shall be provided and maintained so as to be readily accessible during all working hour such number of first aid box or cupboards equipped with such contents as may be prescribed. ये फर्स्ट एड बॉक्स या कपबोर्ड्स जो प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट के साथ ये रहना चाहिए सभी माइंस में। इसके बारे में अर्थात फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में यहाँ बताया गया है, माइंस में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। नथिंग एक्सेप्ट द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट शैल बी केप्ट इन द फर्स्ट एड बॉक्स और कपबोर्ड और रूम। और इस फर्स्ट एड बॉक्स में या फर्स्ट एड रूम में या कपबोर्ड में दूसरा कोई और सामान नहीं रहना चाहिए जो प्रिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त सामान नहीं रहना चाहिए, वो एक स्टोर या इस टाइप का किसी एरिया के लिए यूज़ ना हो। एवरी फर्स्ट एड बॉक्स और कपबोर्ड शैल बी केप्ट in charge of a responsible person who is trained in such first aid treatment as may be prescribed and who shall always be readily available during the working hours of the mine. ये फर्स्ट एड बॉक्स या कपबोर्ड्स एक किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सनस के अंडर में रखना है जिन्होंने इस फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का ट्रेनिंग ले चुके हैं और शिफ्ट में रेडली अवेलेबल है, माइंस का वर्किंग आवर में अवेलेबल है। इन एवरी माइन देयर शैल बी मेड टू एज बी रेडली अवेलेबल सच अरेंजमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कन्वीनियंस टू हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी of persons who while employed in the mine suffer bodily injury or become ill. माइंस में ये अरेंजमेंट होना चाहिए जो हॉस्पिटल में इजीली एक्सेस, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में इजीली जाने के लिए जो कन्वेंस है वो होना चाहिए। जो माइंस में अगर कोई बॉडी इंजरी होता है, सब बॉडीली इंजरी और इल हो जाता है, असुस्थ हो जाता है, तो उनको माइंस हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कन्वेंस होना चाहिए। In every mine wherein more than 150 persons are employed, there shall be provided and maintained first aid room. फर्स्ट एड बॉक्स हर एक माइंस में होना चाहिए irrespective of number of persons employed, but number of persons employed अगर more than 150 persons होता है तो वहाँ पे एक फर्स्ट एड रूम भी होना चाहिए। और इस फर्स्ट एड रूम की सच साइज विथ सच इक्विपमेंट एंड इन चार्ज ऑफ सच मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इस फर्स्ट एड रूम की जो साइज और इक्विपमेंट है ये मेंटेन करने का जो स्पेसिफाई किया गया वो होना चाहिए और इसका इंचार्ज जो है मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, ये बोला गया इस सबसेक्शन 5 में। नेक्स्ट सेक्शन 22, पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स व्हेन कॉज ऑफ डेंजर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइड अगेंस्ट एग्जिस्ट और व्हेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन इज डेंजरस। इस कंडीशन में इंस्पेक्टर को जो पावर दिया गया उसमें इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर फॉर व्हिच नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय और अंडर दिस एक्ट it appears to chief inspector or an inspector that any mine or part thereof or any matter, things or practice in or concerned with the mine or with the control, supervision, management or defective so as to threaten, tend to the bodily injury of any person, अगर ऐसा कोई कंडीशन हो और चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के नॉलेज में इस टाइप का कंडीशन
के बारे में जाने तो he may give notice in writing thereof to owner, agent or manager of the mine, and shall state in the notice the particulars in respect of which he considered the mine or part thereof, or the matter, things, or practice to be dangerous or defective, and require the same to be remedied within such time and in such manner as he may specify in the notice. इस टाइप का जो डेंजर के बारे में हम लोग बताया थे, इस डेंजर अगर नोटिस करते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर इसको नोटिस दे सकते हैं माइंस की ओनर, एजेंट और मैनेजर को, और इसको रेक्टिफाई करने के लिए सर्टेन पीरियड स्पेसिफाई कर सकते हैं. Subsection on A, where the owner, agent or manager of the mine of a mine fails to comply with terms of the notice given under subsection on within the period specified therein, the chief inspector or inspector, as the case may be, may by order in writing prohibit the employment in or about the mine or any part thereof any person whose employment is not his in opinion responsibly necessary for securing compliance with the terms of the notice. अगर ये माइंस मैनेजमेंट ओनर, एजेंट और मैनेजर इस कंप्लाई करने के लिए फेल होते हैं, जो नोटिस दिया गया उस पीरियड में अगर कंप्लाई नहीं कर पाते हैं, देन चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जो नोटिस दिए थे उन्होंने रिटन ऑर्डर के माध्यम से जो लोग इस नोटिस को कंप्लाई करने के लिए ज़रूरत है उनके अलावा बाकी पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड कर सकते हैं उस पार्ट माइंस में या माइंस की पार्ट. Without prejudice to the provisions contained in subsection on, the chief inspector or the inspector, as the case may be, by order in writing address the owner, agent or manager of the mine, prohibit the extraction or reduction of pillars or blocks of materials in any mine or part thereof, if in his opinion such operation is likely to cause the crushing of pillars or blocks of materials or premature collapse of any part of the working or otherwise endanger the mine or life or safety of persons employed therein, or if in his opinion adequate provision against the outbreak of fire or flooding has not been made by providing for the sealing up or isolation of the part of the mine in which such operation is completed and resting area that might be affected by fire or flooding. अगर माइंस का कोई पार्ट में डेंजर हो सकता है जिसमें कोई पिलर का करने में, पिलर को रिड्यूस करने में या ब्लॉक्स ऑफ मटेरियल्स को हटाने में, तब भी अंडर सेक्शन 22 चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर इसको बंद करने के लिए माइंस मैनेजर को नोटिस, माइंस मैनेजर, ओनर और एजेंट को नोटिस दे सकते हैं. सबसेक्शन 3, if the chief inspector or an inspector authorized in this behalf by general or special order in writing by chief inspector is of opinion that there is urgent or immediate danger to life or safety of any person employed in any mine or part thereof, he may by order in writing containing a statement of the ground of his opinion
prohibited until he is satisfied that the danger is removed, the employment in or about the mine or any part thereof. Any person whose employment is not his opinion responsible necessary for the purpose of removing the danger. कोई डेंजर अगर चीफ इंस्पेक्टर और अथराइज्ड इंस्पेक्टर्स जिनको चीफ इंस्पेक्टर अथराइज किया है आ, इनका अगला है इनका ओपिनियन में लगता है कोई अर्जेंट और इमीडिएट डेंजर हो सकता है लाइफ के लिए, सेफ्टी के लिए, देन माइंस और उसका पार्ट जिसमें उनको डेंजर लगता है वो इमीडिएटली पर्सन्स का एम्प्लॉयमेंट बंद कर सकते हैं, उन लोगों के अलावा जिनका इस डेंजर को रिमूव करने के लिए ज़रूरत है, बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट रद्द कर सकता है टेम्परली। सेक्शन 3A, every person whose employment is prohibited under subsection 1A or subsection 3 shall be entitled to payment of full wages for the period for which he would have been but for the provision in employment, and the owner, agent or manager shall be liable for payment of such full wage of that person. सेक्शन 3A बोल रहे हैं अगर सबसेक्शन 3A अब सेक्शन 22 बोल रहा है अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट किया गया अंडर सबसेक्शन 1A और सबसेक्शन 3 में, देन उनका फुल वेजेस इस पीरियड का जिस पीरियड में प्रोहिबिट किया गया सबसेक्शन 1A और सबसेक्शन 3 के द्वारा, तो उनका फुल वेजेस देना है, लायबल टू पे बाय द मैनेजमेंट, ओनर, एजेंट और मैनेजर, प्रोवाइडेड दैट ओनर, एजेंट और मैनेजर मे insisted of paying such full provided such person with an alternate employment at the same wage which such person has receiving in the employment which was provided. ओनर, एजेंट और मैनेजर उनको दूसरा काम भी करा सकते हैं। Subsection 4, where notice has been given under subsection 1 or an order made under subsection 1A, subsection 2 or subsection 3 by an inspector, the owner, agent or manager of the mine may within 10 days after the receipt of the notice or order, as the case may be, appeal against the same to chief inspector, who may confirm, modify or cancel the notice or order. Subsection 1 और ऑर्डर सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के अंडर कोई इंस्पेक्टर ओनर, एजेंट और मैनेजर को कुछ नोटिस या ऑर्डर देते हैं तो उसको मैनेजमेंट 10 डेज के अंदर उसको अपील कर सकते हैं चीफ इंस्पेक्टर के पास, और चीफ इंस्पेक्टर इसको कंफर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। The chief inspector or the inspector sending notice under subsection 1 or making an order under subsection 1A, subsection 2 or subsection 3, and the chief inspector making an order other than order or cancellation in appeal under subsection 4 shall forthwith report the same to the central government. Subsection 6, if the owner, agent or manager of the mine objects to a notice sent under subsection 1 by the chief inspector or an order made the chief inspector under subsection 1A, subsection 2, subsection 3 or subsection 4, he may within 20 days after the receipt or the notice containing the requisition or the order after the date of decision on appeal, as the case may be, send his objection in writing stating the ground thereof
to central government which shall ordinarily within the period of 2 months from the date of receipt of the objection refer the same to committee. अगर कोई इंस्पेक्टर की ऑर्डर या नोटिस की ऑब्जेक्शन है तो चीफ इंस्पेक्टर को कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस सबसेक्शन में देखा। और इसमें अगर चीफ इंस्पेक्टर के कोई ऑर्डर को या नोटिस को मैनेजमेंट ने चाहते हैं इसको अपील करना है तो 20 डेज के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 महीने के अंदर इसको कमिटी के रेफर कर सकते हैं। Every notice under subsection 1 or order under subsection 1A, 2 or 3 or 4 to which objection is made under subsection 6 shall be complied with pending the receipt of the mind of the decision of the committee, provided that the committee may, in the application of the owner, agent or manager, suspend the operation of notice under subsection 1 pending its decision on the objection. इस नोटिस को कंप्लाई करना है और ये कमिटी उसको देखेगा जिस अप्लाई एप्लीएंट अगर नोटिस किया है तो, और कमिटी इस नोटिस को सस्पेंड भी कर सकते हैं। Nothing of this section shall be affect the power of a magistrate under section 144 of the Code of Criminal Procedures 1896. 144 सेक्शन जारी होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर्स की, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा इस सेक्शंस का। Power to prohibit employment in certain case, section 22A. This is added later. Where in respect of any matter relating to safety for which express provision is made or by or under the act, the owner, agent or manager of the mine fails to comply with such provision, the chief inspector may give notice in writing requiring some to complying with within such time as he may specify in the notice, or which shall extend period of time as he may from time to time specify thereafter. अगर कुछ सेफ्टी वायलेशन होता है, ओनर, एजेंट और मैनेजर फेल उसको कंप्लाई करने के लिए फेल होता है, चीफ इंस्पेक्टर इसमें नोटिस दे सकते हैं। नोटिस दे करके उनको कुछ टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। Where the owner, agent or manager fails to comply with the terms of notice given under subsection 1 within the period specified in such notice, or as the case may be within extended period of time specified under the subsection, the chief inspector may, by order in writing, prohibit the employment in or about the mine or any part thereof any person whose employment is not, in his opinion, reasonable necessary for securing compliance with the terms of the notice. ओनर, एजेंट एंड मैनेजर अगर कंप्लाई करने के लिए व्यर्थ हुआ सबसेक्शन 1 की नोटिस की, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22A इस सर्टेन पीरियड में जो और एक्सटेंडेड पीरियड में, तो चीफ इंस्पेक्टर बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट, चीफ इंस्पेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट कर सकते हैं in and about mine or part thereof persons whose employment is not, in his opinion, reasonably necessary for in compliance with the terms of the notice. Every person whose employment is prohibited under subsection 2 shall entitled to pay a full wage for the period
for which he would have been, but for the provision in employment, and the owner, agent, or manager shall be liable for payment of such full wage of that person. अगर सबसेक्शन 2 के हिसाब से किसी का एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड किया जाता है तो उनको उनके जो ऑर्डिनरी सैलरी है, जो वेजेस है, वो फुल पेमेंट करना पड़ेगा. प्रोवाइडेड दैट द ओनर, एजेंट और मैनेजर में insisted for paying such full wage, provide such person with an alternate employment at the same wage which such person was receiving in employment which was prohibited under subsection 2. अगर किसी एरिया का से नोटिस देता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट में प्रॉफिट हो जाता है, तो उनको फुल वेज देना है, लेकिन ओनर, एजेंट, मैनेजर फुल एज तो देंगे बट उनको ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, अल्टरनेट काम करा सकते हैं उसी सेम ओएसएस में. द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, 5, 6 and 7 of section 22 shall apply in relevant to a notice issued under subsection 1 or an order made under subsection 2 of this section as they apply in relation to notice under subsection 1 or under subsection 1A of the section. Next, section 23, notice to be given of accident. एक्सीडेंट होने पे कहाँ नोटिस देना है, क्या देना है, इसके ऊपर इस सेक्शन बताते हैं. सबसेक्शन 1, whenever there occurs in or about a mine an accident causing loss of life or serious bodily injury, or an explosion, ignition, spontaneous heating, outbreak of fire, or eruption in rush of water or other liquid matter, or an influx of inflammable or noxious gases, or a breakage of rope, chain, or other gear by which persons or material are lowered or raised in a shaft or an incline, or an overending case of other means of conveyance in which in any shaft while person or materials are being lowered or raised, or a premature collapse of any part of the working, or any other accident which may be prescribed. The owner, agent, or manager of the mine shall give notice of the occurrence to such authority in such form and within such time as may be prescribed, and he shall simultaneously post an one copy of the notice on a special notice board in prescribed manner at a place where it may be inspected by trade union officials, and shall ensure that the notice is kept on the board for not less than 14 days from the date of such posting. एक्सीडेंट अगर होता है जिसमें लोगों को जान चला जाते हैं या सीरियस बॉडीली इंजरी होता है, अगर कोई एक्सप्लोशन, इग्निशन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, आउटब्रेक ऑफ फायर, ये सब होता है, इंडस्ट्रेट ऑफ वाटर और अदर लिक्विड ये होता है, या इनफ्लक्स और इन्फ्लेमेबल नॉक्सियस गैसेस कुछ होता है, रोप ब्रेक या चेन और अदर गियर जो है इसको ब्रेक हो जाता है, ओवरवाइंडिंग केसेस, सब केसेस अगर कुछ हुआ तब, प्रीमेच्योर कोई एरिया का ऑल एरिया कोलैप्स हो गया, और अदर एक्सीडेंट होने से ओनर, एजेंट और मैनेजर को नोटिस देना है. और इस नोटिस का एक कॉपी 14 डेज तक पोस्ट करके रखना है. सबसेक्शन
on A. Whenever there occurs in about a mine an accident causing reportable injury to any person, the owner, agent, or manager of the mine shall enter in a register such occurrence in prescribed form, and copy of such entries shall be furnished to the chief inspector once in quarter. अगर रिपोर्टेबल इंजरी होता है तो रिपोर्टेबल इंजरी की एंट्रीज एक रजिस्टर में होनी चाहिए और इसका डिटेल्स once in quarter देना है. फैटल सीरियस होने से जो नोटिस देना है और सबसेक्शन ऑन ए बोल रहा है इमीडिएटली रिपोर्टेबल इंजरी का नोटिस नहीं देना है, बट ए एक प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर में होना चाहिए और इसको once in a quarter सबमिट होना चाहिए. When a notice given under subsection on relates to an accident causing of loss of life, the authority shall make an inquiry into the occurrence within 2 months of the receipt of the notice. If the authority is not the inspector, he shall cause the inspector to make an inquiry within the said period. इसका जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी इंस्पेक्टर करेंगे अगर लॉस ऑफ लाइफ होते हैं. इस इंक्वायरी को उस टेन पीरियड के अंदर इंक्वायरी करना होगा. ऑकरेंस जब हुआ उसका 2 मंथ्स के अंदर. द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय notification in the official gazette direct that accident other than those specified in subsection 1 or on a which cause bodily injury resulting in the enforced absence from the work of the person injured for a period exceeding 24 hours shall be entered in a registered in the prescribed form or shall be subject to the provision of subsection on or subsection on a as the case may be. माइनर इंजुरी जिसमें 24 आवर्स की ज़्यादा एब्सेंट होता है वो होने पे वो भी एक अलग रजिस्टर में एंट्री करना है. A copy of the entries in the register referred in subsection 3 shall be sent by the owner, agent or manager of the mine on or before 20th day of January in every year following that to which the entries related to the chief inspector. अगर माइनर इंजरी होता है तो उसके एनुअल रिपोर्ट 20 जनवरी से पहले इस एनुअल रिपोर्ट को भेजना है कैलेंडर ईयर के. Whenever there occurs in and about the mine an accident causing loss of life, serious bodily injury to any person, the place of accident shall not be disturbed or altered before the arrival or without consent of the chief inspector or the inspector to whom the notice of accident is required to be given under subsection 1 of section 23. Unless such disturbance of alteration is necessary to prevent any further accident, to remove bodies of the deceased or rescue any persons from danger, unless discontinuance of work at the place of accident would seriously impede the working of the mine. ये जो एक्सीडेंट हो रहा है अगर लॉस लाइफ होता है, फैटल होता है और सीरियस बॉडीली इंजरी होता है तो प्लेस ऑफ एक्सीडेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा जब तक चीफ इंस्पेक्टर से इसके बारे में बात नहीं होता है या इनका कंसर्ट नहीं होता है या उन्होंने इंस्पेक्ट करते हैं या इसको
अगर डिस्टर्ब नहीं करे तो दूसरे लोगों के लिए खतरा हो सकता है, या डिसीज जो है उनको बॉडी निकालने में दिक्कत हो रहा है, इस कंडीशन में इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड दैट व्हेयर द शिप इंस्पेक्टर मे और सेड inspector fails to inspect the place of accident within 72 hours that of the time of the accident, work may be resumed at the place of accident। अगर 72 आवर्स के अंदर ये इंस्पेक्शन नहीं होते हैं तो मैनेजमेंट इसको चेंज कर सकते हैं। देन पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अपॉइंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन केस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने पे गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर सकते हैं, इसका पावर जो है सेक्शन 24 में दे रखा है। व्हेन एनी एक्सीडेंट of the nature refer in any of the clauses of subsection 1 of section 23 occurs in or about mine, the chief inspector may, if it is of opinion that a formal inquiry into the cause of and circumstances attending the accident ought to be held, appoint a competent persons to hold such inquiry, and may also appoint one or more person possessing legal or special knowledge to act as assessors in holding the inquiry। नोटिफाइंग डिजीज की अगर एक केस है तो उसको गवर्नमेंट एक फॉर्मल इंक्वायरी के लिए भेज सकते हैं और उसी में ऑन और मोर पर्सन्स अपॉइंट हो सकते हैं। सबसेक्शन 2, the person appointed to hold such inquiry shall have the powers of civil court under the Code of Civil Procedures 1908 for the purpose of enforcing the attendance of witness and complying the production of documents and material objects। ऐसे जो पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है, इन्होंने कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर्स 1908 एक्ट के अंदर सिविल कोर्ट की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं लोगों को विटनेस में बुलाने के लिए या प्रोडक्शन मटेरियल्स की जो कमी है उसको विटनेस या कंप्लेन करने के लिए उनको बुला सकता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर्स 1908 की कोर्ट की जो पावर है वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये जो कमिटी बनाएंगे उसमें any person holding an inquiry under this section may exercise such the power of an inspector under this act as he may think it is necessary or expedient to exercise the process of inquiry। अगर एक कमेटी बना है, कमेटी इंक्वायरी करने के लिए जैसे सिविल कोर्ट की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिमिलरली एक इंस्पेक्टर की पावर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अंडर सबसेक्शन 3 of section 24। The person holding an inquiry under this section shall make a report to the central government stating the cause of accident and its circumstances and adding any observations which he or any of the assessor may think fit to make। या पर्सन्स जो इंक्वायरी करेंगे उनका एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है जिसमें इस एक्सीडेंट के कॉज और सर्कमस्टेंसेस बताया जाएगा और एनी अदर ऑब्जर्वेशंस अगर चाहते हैं एसेसर या एसेसर्स उसको चाहते हैं तो उसको दे सकते हैं। देन नेक्स्ट नोटिस ऑफ डिजीज। ये जो नोटिफाइंग डिजीज है इसके ऊपर ये सेक्शन है। सबसेक्शन 1, where any person employed in a mine contracts any disease notified by the central government in official gazette as a disease connected with mining operations, the owner, agent or manager of the mine as the case may be shall send notice thereof to chief inspector and
to such other authorities in such form and within such time as may be prescribed. सर्टेन डिजीज़ जो गजेट नोटिफिकेशन में अभी 8 डिजीज़ है, ये जो है इस डिजीज़ में कॉन्टैक्ट होता है तो ओनर, एजेंट और मैनेजर इसको चीफ इंस्पेक्टर और अदर इंस्पेक्टर्स और एनी अदर अथॉरिटी जो चीफ इंस्पेक्टर बताएंगे इस डिजीज़ का नोटिस देना है. Subsection 2. If any medical practitioner attend on a person who is or has been employed in a mine or who is believed by the medical practitioner to be suffering from any disease notified under subsection on, the medical practitioner shall without delay send a report in writing to chief inspector stating the name and address of the patient, the disease from which the patient is or is believed to be suffering, and name and address of the mine in which the patient is or was last employed. इस सबसेक्शन में अगर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर इस टाइप का डिजीज़ में किसी को देखते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर्स को मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से एक रिपोर्ट जाना चाहिए जिसमें जो पेशेंट है उनका नेम एंड एड्रेस, उनका डिजीज़ कब से वो डिजीज़ अफेक्ट कर रहा है और कौन सा माइंस में इस पेशेंट एम्प्लॉय है या लास्ट एम्प्लॉयमेंट किए थे, ये स्टेट करके एक रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर को जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनकी तरफ से जाना चाहिए. Where the report under subsection 2 is confirmed to the satisfaction of chief inspector by the certificate of a certifying surgeon or otherwise that the person is suffering from the disease notified under subsection on, the chief inspector shall pay to the medical practitioner such fees as may be prescribed, and the fees so paid shall be recoverable as an arrear of land revenue from the owner, agent or manager of the mine in which the person contracted the disease. ओनर एजेंट इसको पेमेंट भी करेंगे या अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो उनका जो रेवेन्यू है वहाँ से ये रिकवर कर सकते हैं. In any medical practitioner fails to comply with the provisions of subsection 2, he shall punishable with fine which may be extended to 50 rupees. अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर इसका नहीं कर पा रहा है सबसेक्शन 2 के बारे में जो रिपोर्ट है नहीं कर पा रहा है तो उनको किस 2 के बेसिस में फ़ाइन किया जाएगा और फाइन आज का रेट में 50 रुपीज़ है. पावर्स टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉज ऑफ डिजीज़. कुछ डिजीज़ होने से उसका डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने का पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है सेक्शन 26 में. द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ कंसीडर इट्स एक्सपीडिएट टू डू सो अपॉइंटमेंट ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन्स टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट इट on any case where diseases notified under subsection on of section 25 has been or supposed to have been contract in a mine and may also appoint one or more persons possessing legal or speaking special knowledge on the act as assessor in such inquiry.
सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कॉम्पिटेंट पर्सन्स को इसके ऊपर अपॉइंट कर सकते हैं। और जिनको लीगल स्पेशल नॉलेज है उनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 of section 24 shall apply to an inquiry under the section of the same manner as they apply to any inquiry under that section. And subsection 2 and 3 of 24 में प्रोविजन करके इंक्वायरी ऑफिसर कर सकते हैं और इंक्वायरी ऑफिसर अपना डिटेल्स भेज सकते हैं। नेक्स्ट इस सेक्शन की आज के वीडियो की लास्ट सेक्शन publication of report. The central government may cause any report submitted by the committee under section 12 or any report or extracts from the report submitted to it under section 26 and shall cause every report submitted by a court of inquiry under section 14 to be published at such time and such manner as it may think fit. सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो सेक्शन 14 के अंडर है उसमें पब्लिश कर सकते हैं। हम लोग सेक्शंस सारे देख चुके हैं। अब हमारा इसमें कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर हम लोग जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अंडर सेक्शन 19 ऑफ द माइंस एक्ट। Option A, arrangement of drinking water at suitable points at every mine shall be provided and maintained. Option B, sufficient supply of cool drink water for all persons employed in the mine. Answer option only A correct, that is B is not correct. Only B is correct, that is A is not correct. Both A and B correct, and none of the statements are correct. The correct answer is both A and B. Both the options are correct, and we can find it under section 19 of the Mines Act. Next question, drinking water arrangement should not be suited within dash of any washing place, urinal, etc. as per section 19 of the Mines Act 1952. 2 meter, 6 meters, 20 meters, 50 meters. The correct answer is 6 meter. Under section 19 just written this should not suited within 6 meters of any washing places, urinals, latrine, etc. Next, choose the correct statement. First aid station with proper equipment to be provided at accessible place in mine. Every supervisory staff is required to hold valid first aid certificate. Option A is correct, this is option B not correct. Only option B correct, that is option A is not correct. Both A and B correct. None of the statements are correct. Correct answer is both A and B are correct. Their first aid stations should be equipped, and it should be accessible place, and every supervisor staff should have valid first aid certificate. So the both statements are correct. Next question, choose the correct statement as per section 22 of the Mines Act. The owner, agent and manager fails to comply notice within the specific time. Chief Inspector Mines provided the employment except necessary for compliance. Option
2 B. Chief Inspector of Mines prohibited the operation when, in his opinion, like to endanger of mine or life or safety of persons employed therein. इस स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है? ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए करेक्ट ओनली, ऑप्शन बी ओनली करेक्ट, both A and B correct, none of this statement are correct. Both A and B are correct and we can refer it under section 22. Next, despite of writing to management, they do not certify the violations. The CIM, Chief Inspector Mines, can execute the power under which section of the Mines Act? 23, 22A, 22, 24. The correct answer is section 22A. Next, on receipt of the notice under section 22A, if the owner appeals against the notice, then option A, the owner has to wait for reply from the chief inspector and then comply. The owner shall comply the observations of the chief inspector without waiting for the committee to decide. The central government will decide whether to immediately comply or not. The owner need not comply the observation of chief inspector. None of the options. Option B, the owner shall comply the observation of chief inspector without waiting for the committee to decide. Next, on receipt of the appeal made by the owner, agent or manager against the decision of chief inspector under section 22A, the central government shall take a decision and inform it to the owner, agent or manager, refer to the committee, advise chief inspector to reconsider the case. Central government may refer it to legal advisors. Option E, advise concerned state government. Option B is correct, refer it to the committee. Next, which one of the following statement is incorrect? In case of fatal accident in a mine, the management must inspect the site of accident, notify to regional inspector of mines, conduct investigation himself, ensure that the place of accident is not disturbed. Place of accident should not be disturbed. रीजनल इंस्पेक्टर्स को इन्फॉर्म करना है और एक्सीडेंट साइट को इन्वेस्टिगेशन करना है. इसमें हम लोग देख सकते हैं हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेशन करने का मैनेजमेंट के अथॉरिटी नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट. conduct investigation by himself, all others are correct. Next, choose the correct sentence regarding fatal serious accident or dangerous occurrence in mine. The mine management informed to regional inspector of mines. Notice for chapter form 4A to district magistrate, chief inspector mines and regional inspector mines within 24 hours. Copy of notice to be displayed on board for 14 days. All the options are correct. Option D is the right answer. All these are correct. Next question. How many diseases notified by the central government in the official gazette? For mining, of course. 5, 6, 8, 10. The correct answer is 8. We can see here this notified diseases, all the diseases here: pneumococcosis, silicosis, manganese, pyrosin, nervous system, asbestos is
cancer of lungs or the stomach or the linear and premium. Noise induced hearing loss, contact dermatitis caused by direct contact with chemicals, pathological manifestation due to radium or radioactive substance. So these are the 8 notifiable diseases, and we can see the reference. Which occupational disease is notified under Section 25 under the Mines Act after the 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस? प्रीवियस जगह पे हम लोग देखा है, अब इसको एक बार और देख लेते हैं. एस्बेस्टोसिस, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, सिलिकोसिस, मैंगनीज पॉइजन. करेक्ट आंसर इज नॉइज इंडेंट हियरिंग लॉस. What is meant by notified mining disease under Section 25 of the Mines Act? A disease notified by DGMS in the official circular, disease notified by state government in notification, disease notified by central government in official gazette. All. Correct answer is option C, disease notified by central government in official gazette. Next. Which occupational disease is notified on Section 25 and Mines Act after 10th National Conference? Noise induced hearing loss is the correct answer. C. Repeat. Okay. The person's appointment to hold the court of inquiry under Section 24 of the Mines Act have all the powers of civil court under the Code of Civil Procedure 1908 for the purpose of enforcing an attendance of witness, complying the production of documents, complying the production of material objects. A and B only, B and A, B and C only, A and C only, A, B and C तीनों ही हैं, A और B और C only. Correct answer is option D, A, B and C. Section 26 empowers central government to appoint a competent persons to inquire and report any cause of notified disease observed or suspected. Appoint a competent persons to inquire an accident that injured more than 5%. more than 5% डिजास्टर होने से एक पर्सन को इंक्वायरी करने के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा. अपॉइंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन्स टू गिवन ए रिपोर्ट फॉर ग्रुप ऑफ माइंस. Appointment of competent persons to suggest modification in rules and regulation. Appointment an expert to develop safety management plan. Option A is the correct answer. Appointment of competent persons to inquire and report any cause of notified disease observed or suspended. Next, here it's in Section 26 we can see this. Okay, next, this was the question we prepared. There are lot other question also, और भी क्वेश्चन हो सकता है. ये सैम्पल क्वेश्चन है, ये कंप्लीट नहीं है. आप और भी देख लीजिए और भी पढ़िए, क्योंकि ये इस लिमिटेड टाइम के तहत हम लोग HRDC की रिव्यू तरफ से टोटल तो नहीं कर पाएंगे, बट जितना हम लोगों को सैम्पल क्वेश्चन हो सकते हैं चैप्टर वाइज हम लोग देंगे. इसके अलावा अलग वीडियोस में जो लास्ट ईयर्स का क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग पोर्शन में.
या उसको हम लोग लाइव सेशन में भी जा सकते हैं। इन केस अगर लाइव सेशन आप चाहते हैं तो आप HRDC की रूबरू में ज़रूर मिलिए या आप कांटेक्ट कीजिए हमारा ईमेल में, हमारा फ़ोन नंबर में। इस सीरीज़ की बाकी वीडियो इसको बाद में बनाया जाएगा और इसी चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, आपने इस वीडियोस को देख रहे हैं और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपका स्टेटरी एग्ज़ाम में सहायक हो और आप अच्छा रिज़ल्ट करें। इस कामना के साथ सबके धन्यवाद।